Okay, so yeah. So till here it's complete. We did our balance sheet opening. Cash bank got tallied. It's nothing like that. It will always tally. It got tallied. Okay. Then datas और कोई entry था. No. Datas का closing balance is given in the question. Yes, it's given 2,500. Close your datas account. Okay. So 2,500 plus 31,250. 33,750. 33,750 minus 1,750. So the balancing figure is 32,000. Okay. So this balancing figure 32,000 is nothing but my credit sales, which is a hidden entry, not given in the question. Okay. So this is credit sales, the balancing figure. क्रेडिट सेल्स का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, बाय सेल्स credit sales. How much? 32,000. Okay. Yeah, very good, Diksha. Okay, now come to creditors. Creditors का closing दिया है, हाँ दिया है. तो closing balance of creditors 3,750. Close your creditors account. Okay, 3,750 plus 15 to 50. 19,000. This chapter is very tricky chapter, huh? Yeah, but it's all with basic fundas जो आप लोग since 11th standard कर रहे हो. 15,590. 15,590. This is nothing but my credit purchase. Okay. So this is the balancing figure. इसका second effect trading account debit. Two purchases. Credit purchase 15,590. ठीक है. फिर एक स्टॉक भी था अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक. यस, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग बैलेंस शीट का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, 1870. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ईयर इन ट्रेडिंग अकाउंट. एवरीथिंग विल हैव टू इफेक्ट्स. थिंक फ्रॉम टू इफेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सो मेरा क्रेडिटर्स भी कंप्लीट हो गया, मेरा कैश बैंक भी कंप्लीट हो गया. ओके, मेरे सारे सपोर्टिंग लेजर्स कंप्लीट हो गए एक्सेप्ट फॉर अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो. क्लोज योर ट्रेडिंग अकाउंट. यू आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स. या converting single entry into double entry means doing final accounts indirectly. 32,000 plus 140 plus 1870. 34010. 34010 minus 2,500 minus
15,590. 34,010 minus 2,500 minus 15,590. So 15,920 is my answer. 15,920. This is what? This is my gross profit. Okay, my gross profit. इसका second effect लिखो इधर. By gross profit carried, I mean brought down, 15,920. Okay, now close your, yeah, this account. Which PNL account? 15,920. 15,920. Okay, minus 1,500 minus 3,500 minus 870 minus 700 minus 250 minus 415 4750 4350. This is what? Obviously my capital. Which capital? I mean net profit, sorry. Net profit. Okay. So इसका second effect कहाँ जाएगा? Net profit का add to capital. Right here. Add to capital. Net profit. 4350. Okay. Closing creditors है, हाँ है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर्स अकाउंट में गया. सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट 3750. ओके. सेकेंड इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 6250. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 2500. सबका सेकेंड इफेक्ट आएगा ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में. एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओके. 8120 plus, sorry, minus 3250 minus 910 minus 140 minus, sorry, plus 250 plus 4350 8420. So right here 8420 plus 3750 12,170. Check the asset side. 1,500 plus 50 plus 6250 plus 2,500 plus 1870 12,170. Is this clear to everyone? समझ में आ रहा है? Is it clear to everyone? Clear with the sum? It is similar to final accounts only. सिर्फ आपका एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है 4-5 more ledgers बना के. Okay? So this completes our sum. Fine.